News coming in, and this is about the seat sharing agreement that can be worked out in the state of Maharashtra as far as India Alliance is concerned. Amid the rift in India Alliance over seat sharing, CNN News 18 spoke to Sanjay Raut, who reveals that Uddhav Sena will contest from 23 seats and they aren't asking for the Congress seats. He once again asked the Congress party to start with 0. Uddhav Sena and Mr. Sanjay Raut asserts that if the Congress party wants to come back in the state, they have a lot of work to do, and that's the comment once again being reiterated by Mr. Sanjay Raut. Please listen in. संजय जी, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर। कांग्रेस कह रही है कि हम 23 देने के लिए तैयार नहीं है। संजय निरुपम कह रहे हैं कि 23 हम दे ही नहीं सकते। कांग्रेस महाराष्ट्र में कांग्रेस का मतलब क्या है? कांग्रेस है ने कौन? कांग्रेस कौन देगी यहां देने वाले? कांग्रेस के पास अभी एक भी एमपी नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास आज एक भी एमपी है क्या? 2019 में सुशील कुमार शिंदे से लेकर अशोक चव्हाण तक सभी हार गए। कौन है? एक सीट चंद्रपुर की थी, वो भी कैंडिडेट शिवसेना से वहां गया था, हमारा एमएलए था, हमने भेजा था, उनके पास कैंडिडेट नहीं। तो क्या कांग्रेस जब देने की बात करती है तो दिखना चाहिए उनके झोले में एक्चुअली क्या है महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे जा रहे हैं 3 तारीख को दिल्ली में सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर डिस्कशन करने के लिए। देखिए, बातचीत होगी। हमने ये उद्धव जी ने यहाँ दिल्ली में बात किया है, जब हम भी थे, राहुल जी थे, सोनिया जी, खरगे जी, वेणुगोपाल जी, कि कांग्रेस के बारे में अगर सीट शेयरिंग करना है कांग्रेस के साथ तो महाराष्ट्र में नहीं होगा, दिल्ली में होगा, क्योंकि यहाँ किसी को अधिकार ही नहीं है ना। कांग्रेस एक अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल की हुई पार्टी है हमारे गठबंधन में। 10 बार आप दिल्ली में जाओगे, पूछोगे कि सीट के लिए आप दिल्ली में भागम भाग करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम 2, 4, 5 घंटा दिल्ली में बैठेंगे और पूरा एक दिन में सीट शेयरिंग कर आ जाएंगे। उस मीटिंग में, उस बैठक में जो होगा वो फाइनल होगा। My colleague Preeti is joining us on the broadcast, giving us more perspective. Preeti, what is the feeler that you pick up from the Uddhav Sena? Are they, really inclined towards giving more ground to the Congress party, giving more elbow room? What are the negotiations which are going on right now? It's a totally confusion is going on in MVA between the Sharad Pawar NCP party, Congress party, and Uddhav Thackeray Shiv Sena party. And as we said in an exclusive interview to CNN News 18, Sanjay Raut, the Shiv Sena MP, clearly said that we will not compromise less than 23 seats, because already in Maharashtra since last 10 elections, Shiv Sena, Uddhav Thackeray party is contesting 23 seats. So we want the 23 seats, and Uddhav Thackeray's party is firm on the 23 seats. Whereas the Congress leader Sanjay Nirupam spoke to the CNN News 18 early morning and clearly said that this formula is not acceptable with the Congress party. So when Sanjay Raut spoke to the CNN News 18, he clearly said that Maharashtra Congress leader doesn't have any power. They cannot decide about the seat formula. So on 3rd of Jan, Uddhav Thackeray is going to Delhi and he will meet the Congress President Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi, and they will discuss the seat formula with this both the leader. Meanwhile, the Shiv Sena, Uddhav Thakeray's party is firm on the 23 seat, whereas the Congress is not ready to give them a 23 seat. And another party is also likely to join the MVA is the Prakash Ambedkar party, and Prakash Ambedkar also give the new formula that the 4 party will contest 12 seats in Maharashtra, and this formula is also not acceptable with the Congress party. So there are lots of confusion is going on and lots of conflicts among the 3 parties going on in Maharashtra. All right, Preeti, thank you so much for putting all of that into perspective. We'll of course keep coming back to you, and if the state of Maharashtra is only a test case or a sample case, that confusion can prevail in other states as well.